Hello everyone, welcome to the biology online class. Now, see in the last video lecture, when we were talking about the living world, we had discussed what is systematics, what is taxonomy, what is a taxon, what is binomial nomenclature, what are the rules of binomial nomenclature. So now in this video lecture, we will talk about the taxonomic categories. Okay, now when we are talking about the taxonomic categories over here, category is basically part of overall taxonomic arrangement. Okay, so how the animals are identified, how they are classified into the different taxon depending upon their characters. Okay, if the characters are studied, and if there are two animals who have the same exact characters, they will be placed into one taxonomic category. So there are different taxonomic categories over here, and all the categories together, okay, it constitutes of taxonomic, what we call is taxonomic hierarchy. Okay, it is called as a taxonomic hierarchy. Now each category, okay, there are different categories into the taxonomic hierarchy. Hierarchy मतलब क्या, एक सबसे बड़ा वाला लेवल होता है, ओके, उसके नीचे एक कैटेगरी होती है, उसके नीचे और एक कैटेगरी होती है, उसके नीचे और एक कैटेगरी होती है. सो इन दिस वे बड़े से लेके छोटे तक जितने भी कैटेगरीज होते हैं, all these categories together, there it is called as a taxonomic hierarchy. Okay, now each category over here, each taxon over here, हम लोग category को taxon भी बोल सकते हैं. Okay, तो each category over here is going to be referred as unit of classification. So if the question is asked, what is the unit of classification? A taxon, okay, and we can say a category is a unit of classification. Okay, or we can say it is a rank. हम लोग इसको रैंक भी बोल सकते हैं. कौन सबसे टॉप रैंक पे रहेगा, विच कैटेगरी विल बी ऑन द टॉप मोस्ट रैंक एंड विच कैटेगरी विल बी ऑन द लोअर मोस्ट रैंक. Sorry. So this is how the taxonomic categories are done. This is how the classification is done and everything. Okay, so when we talk about taxonomical studies, okay, all the organisms, including whether it is plants or whether it is animals, okay, we know that there are 5 different kingdoms, right? All these organisms which are present on the planet Earth, they are divided into the 5 different kingdoms. We will study about this 5 kingdoms into the next topic, that is the biological classification. So kingdom jo hota hai, okay, when we talk about the kingdom, okay, so kingdom is the highermost rank, kingdom is the topmost category, kingdom is the topmost taxon, we can say. So now kingdom के बाद जो second वाली जो category होती है, okay, after the kingdom the second category is phylum. Okay, so we are talking about the categories now. After the phylum there is class, okay, after class there is order, after the order there is going to be the family, okay, after family there is going to be the genus, and after the genus, let me write here, after the genus is going to be the species. okay, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर सपोज एनिमल किंगडम हम लोग देखेंगे, we are on animals, we can easily relate with the animals. So if we take the animal kingdom, okay, cockroach is an animal, human is also an animal, okay, monkey is also an animal, earthworm is also an animal. So एक common characteristics हम सब लोगों में होती है. Okay, so when we see the common characteristics, we can categorize them into a general category that is called as a kingdom. But in that one kingdom, which is the most general category and the highermost category, in one kingdom there might be many phylums. Okay, because again we are going to observe the characteristics of the organism and we will place them into the different categories depending upon their character. So बहुत सारे phylums होते हैं एक kingdom में. So when we again study those phylums,
we will see that there are also some dissimilarities in those organisms. So in one phylum there are many classes, okay, in one class there are many orders, okay, of animals. In one order there are many families. In one family there are many genuses, and in one genus there might be many species. For example, let us take an example of animal, okay. Panthera leo, Panthera tigris, Panthera pardus. Okay, so what is the common thing over here? They belong to the same genus. Okay, we know, we have studied binomial nomenclature कि first name जो होता है, okay, in the binomial nomenclature वो genus का नाम होता है, second name जो होता है वो species का नाम होता है, right? So Panthera तो genus है, all these animals belong to the Panthera genus, but the species is different. एक लियो है, एक टिग्रिस है, एक पैरडस है, राइट? सो दे बिलोंग टू विच फैमिली, अगर ऐसा देखा जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने क्या बोला कि एक जीनस में बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, राइट? एक फैमिली में बहुत सारे जीनस होते हैं. तो ये जो जीनस है, फॉर एग्जाम्पल फेलिस, जो कैट होता है, ओके, डोमेस्टिक कैट, वो फेलिस जीनस को बिलोंग करता है. तो ये फेलिस एक जीनस है, पैंथेरा भी एक जीनस है, जो एक कॉमन फैमिली को बिलोंग करते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ फेलिडी फैमिली. जितने भी कैट लाइक एनिमल्स है, दे आर प्लेस्ड इनटू वन फाइलम, दैट इज अ फेलिडी. और एक फैमिली भी है, ओके, बट वो फैमिली जो है वो डॉग लाइक एनिमल्स है, तो वो होते हैं कैनिडी, राइट? तो नाउ कैनिडी इज वन फैमिली, फेलिडी इज वन फैमिली, लेकिन उनका ऑर्डर जो है वो सेम है. हाउ द ऑर्डर कैन बी सेम? बिकॉज दे आर ऑल कार्निवोर्स. सो उनका जो ऑर्डर है वो कार्निवोरा है, राइट? Now when we talk about their class, okay, class, they belong to the mammals. Why mammals? Because here the female animals, they have the mammary glands, they produce milk through the mammary glands for the nourishment of their offspring, right? So now कार्निवोरा है, तो दूसरा भी एक ऑर्डर है जिसको हम लोग हर्बीवोरा बोलते हैं. जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स है, डियर्स, एलिफेंट, जिराफ, दे आर हर्बीवोर्स. बट इफ यू सी, देयर आर सम कॉमन थिंग्स इन देम. जिराफ आल्सो इज अ मैमल, dog also is a mammal, cat also is a mammal, so that's why they are placed in the same class, that is a mammal, right? But this is about the mammal. So this mammal is placed in a phylum. This phylum is called as a chordata, right? Now chordata में तो और भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, right? chordata में दूसरे भी क्लासेस आते हैं. chordata में एव्स भी आते हैं, chordata में एम्फीबियंस भी आते हैं, chordata में रेप्टाइल्स भी आते हैं, ओके. सो ऑल दीज, फिर उसके बाद पाइसेस भी आते हैं, ओके, साइक्लोस्टोमाटास भी आते हैं. सो ऑल दीज आर chordata. Okay, even though they belong to the different classes, but they have the same characteristic, that is all of them are chordates, right? So that's why they are placed into the chordata phylum. Now chordata animals है, non chordates भी होते हैं, right? तो ये non chordates भी animal है, chordates भी animal है, so that's why all of these are placed into the same kingdom, that is a Animalia. आ रही बात समझ में? सो इफ यू सी, स्पीशीज जो होता है, विच इज द लोअर मोस्ट रैंक ऑफ द टैक्सॉन, इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, ओके. एंड इफ यू सी द किंगडम, इट इज वेरी मच जनरल. तो किंगडम जो है उसमें बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, एक फाइलम में बहुत सारे क्लासेस होते हैं, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर, एक ऑर्डर में बहुत सारे फैमिलीज, एक फैमिली में बहुत सारे जीनसेस, और एक जीनस में बहुत सारे स्पीशीज. बट स्पीशीज जो होता है वो सबसे स्पेसिफिक टैक्सॉन होता है, राइट? सो दिस इज अबाउट द जनरल concept that I wanted to discuss you about the taxonomical hierarchy. Okay, now after the taxonomical hierarchy, what we have studied, all the animals, plants, okay, whether these plants, okay, we will study in the plant kingdom. So in plants, instead of phylum, another term is used, that is called as a division. Okay, तो प्लांट किंगडम होता है, और प्लांट किंगडम में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं.
एनिमल किंगडम होता है और एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स होते हैं. दिस यू हैव टू रिमेंबर. नाउ लेट अस स्टार्ट द जनरल डिस्कशन ऑन the taxon, that is a species. Now as we suggested, as we discussed, that species is the most specific of the taxon. Okay, tigris, when we say tigris हमारे दिमाग में टाइगर ही आना चाहिए. when we say leo हमारे दिमाग में लायन ही आना चाहिए. okay, so all lions you can see, if we have 10 lions and 10 tigers, you will see that all the lions they have the same fundamental characteristics. Basic characteristics जो उनके होते हैं, phenotypic characteristics या फिर internal characteristics जिसको हम लोग anatomical characteristics बोलते हैं, so वो same होते हैं and they reproduce among themselves. वो जो है lions के साथ ही reproduction करते हैं. So these are the animals who have the same fundamental basic characteristics and they inbreed among themselves or they breed among themselves. So such kind of a unit is the species, right? So we have already discussed about the different species in case of the animals. Plants का example लेते हैं हम लोग species के लिए. okay, एक genus होता है solanum. okay, solanum tuberosum, सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए. solanum tuberosum जो है हमारे सबसे फेवरेट सब्जी सबके घर में रहता है, पोटैटो का नाम है. ओके, सोलानम ट्यूबरोसम. और एक है सोलानम मिलोंजिना. ओके, और एक फेवरेट सब्जी होती है दैट इज बैंगन, दैट इज ब्रिंजल. ओके, सो व्हाट यू कैन सी दे बिलोंग टू द सेम जीनस, लेकिन पोटैटो स्पीशीज इज डिफरेंट एंड मेलोंजिना स्पीशीज इज डिफरेंट. ओके, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ओके, वी बिलोंग टू होमो सेपियंस. ओके, होमो इरेक्टस भी होते हैं, होमो हैबिलिस भी होते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, होमो सेपियंस है. तो हमारा जो स्पीशीज है, okay, homo sapiens sapien. So when we say homo sapiens sapien, it means that we are talking about the humans, that is the most evolved humans in the evolutionary history. So this is about the species. I hope everything is clear about the species. Sorry, let us talk about the genus now. Now genus जो है, it is a bit general. Okay, it is not that specific as species. So many different species. Okay, for example, let us take the example of potato and brinjal. उनके प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे कि जो सिमिलर है. Okay, that's why these different species are placed into one genus because they have some common characteristics. So that is called as a genus. So basically genus क्या होता है? Genus comprises of groups of related species. तो ये जो है हम लोगों को याद रखना है. The related species are placed into one genus. Okay, as we have the same examples here, हम लोग लेते हैं Solanum tuberosum, Solanum melongena, Panthera leo, Panthera tigris, Panthera pallidus. Okay, they have some common characteristics, that's why they are placed into the same genus. Let us move on to the next taxon, that is a family. Okay, now we can make our own definition. Family क्या है? जैसे genus related species से बना हुआ रहता है, वैसे ही family जो है, it is a group of related genus. Okay, related genus जो है, all they are placed into the same family. Okay, let us see. Let us take the example of Solanum is one genus. Okay, Petunia is one genus. Datura, ये सब plants के नाम है, is one genus. But all these genuses are placed into the same phylum, and the name of the phylum is Solanaceae phylum. तो ये याद रखना पड़ेगा because competitive exams में इनके फैमिली के नाम पूछे जा सकते हैं. ओके, सो ये जो फैमिली है टू विच दिस प्लांट्स बिलोंग टू इज सोलेनेसी. और इफ वी सी अबाउट द पैंथेरा, ओके, पैंथेरा इज अ जीनस. फेलिस जो डोमेस्टिक कैट है उसका जीनस फेलिस है, बट पैंथेरा एंड फेलिस हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक, दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इनटू द सेम फैमिली, और उसका फैमिली का नाम होता है फेलिडी.
whereas dogs like animals are placed into another family which is called as Canidae, right, respectively. So this is all about the family. Now let us talk about the order. So now we can make the definition of order. Order is a group of related families, right? ऐसा हम लोग sorry